Start Standard 5th Maths Chapter number 15 Commercial Arithmetic. This topic we cover in Profit and Loss, Unitary Method, Percentage. First we start Unitary Method. Unitary, that means 1 unit. First we find out the value of one item and then finding the value of required number of item. Finding the value of one item first and then finding the value of the required number of item is called unitary method. जब भी आपको 1 यूनिट का निकालना है, पहले आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम का अमाउंट आपको मांगा है वो अमाउंट आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, वो मेथड कहलाती है यूनिटरी मेथड. वी स्टार्ट Self practice exercise 15A. First question is, if 3 liter of petrol cost is rupees 223 rupees 0.50, then what is the cost of 10 liter of petrol? आपको 3 लीटर पेट्रोल कॉस्ट दी हुई है, आपको 10 लीटर पेट्रोल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वी राइट हियर cost of 3 liter petrol rupees 223.50, cost of 1 liter petrol 203.50 divided by 3. Here we write here 223.50. 3 sevens are 21. Okay, 0, 2 less than 1, 1, 3. 3 fours are 12. Again we put here decimal upper side 5. 3 fives are 15. Then 1 liter petrol cost is 74.50 rupees. Okay, we find the cost of 10 liter petrol, then 10 multiplied by 74.50. आपको पता है जब डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ द नंबर इज़ 10 वी शिफ्ट द डेसिमल आफ्टर वन नंबर, दैट डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम हियर. इस कम 745 रुपीज़ 745 कॉस्ट ऑफ 10 लीटर. Second question, if 7 eraser cost rupees 21 rupees 0.84, find the cost of 11 eraser. First we find out the cost of 1 eraser, then we find out the cost of 11 eraser. आपको 7 eraser की कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है, आपको पहले कितनी निकालनी है 1 eraser की कॉस्ट. we find out 21.84. 7 threes are 21. 0, 0. Shift the decimal here. 8. 7 ones are 7. 14. 7 twos are 14. That means cost of 1 eraser rupees 3.12. We find out cost of 11 eraser 3.12 multiply 11. We find here 3.12 multiply 11. 11 twos are 22. 2 carry. 11 ones are 11. 12, 13. 3, 1 carry. 11 threes are 33. Plus 1, 34. Its cost of 11 eraser is rupees 34.32. Here write your answer, rupees 34.32 cost of 11 eraser. Next question is, if 1 dozen bananas cost rupees 60, what would be the cost of 8 bananas? आपको 1 डजन बनाना की कॉस्ट दी हुई है, आपको फाइंड आउट करनी है 8 बनानास की. यू नो
1 dozen equal 12 bananas. We can write here cost of 12 bananas equal rupees 60. Cost of 1 bananas equal 60 divided by 12. We can write 12 ones are 12, 12 fives are 60. This comes rupees 5. Then cost of 8 banana, 8 into 5 is come 40 rupees. Answer rupees 40 cost of 8 bananas. Question number 4th and 5th is homework. Question number 6 is, if 5 brass clay box cost rupees 21,600, find the cost of 9 such clay boxes. Hint is 1 gross equal 12 dozen और 144 pieces. आपको दिया हुआ है 1 gross equal 12 dozen equal 144 pieces. We can multiply 144 into 5 equal 720. यह हमने मल्टीप्लाई बाय 5 इसलिए किया है क्योंकि आपको 1 ग्रॉस में दिए हैं 144 पीसेज. देन वी फाइंड आउट 5 ग्रासेस. कॉस्ट ऑफ 720 clay box rupees 21,600. The cost of 1 clay box 21,600 divided by 720. We cut the 0. 12 6 are 72. We can write here 2160. 12 12 ones are 12. 11 9 6 12 8s are 96. 0 0 180. Again we write here 6 ones are 6. 6 3s are 80. Rupees 30 cost of 1 clay box. We find cost of 9 clay box. 9 into 30 is comes 270. Rupees 270 cost of 9 clay box. Okay, next. 8 score of banana cost rupees 384. Find the cost of 85 bananas. 1 score equal 20 pieces. We can find 8 into 20, that come 160 pieces. आपको दी हुआ है कॉस्ट ऑफ 160 बनानाज इज रुपीज 384. देन कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज 384 डिवाइडेड बाय 160. वी कैन 4 4s are 60. 0 4 9s are 36. 4 6 are 24. 4 1s are 4. 4 2s are 8. 4 4s are 60. Okay, we can write here 2.40. Then what cost of 1 banana is 2 rupees 40 paisa. You can find cost of 85 bananas. 85 multiplied by 240. We can multiply here 2.40 multiply 85. 0 5 4s are 22. 5 2s are 10. 11 12. 0 8 4s are 32. 3 8 2s are 16. 17 18 19. 0 0 2 2s are 4. 9 1 10. 204. 1 2 decimal put here. Then find of 204 rupees. Cost of 85 banana is rupees 204. Cost of 85 banana.
Next is, if 2 dozen notebook cost rupees 960, find the cost of 1 score of notebook. आपको यहाँ पे 2 डजन नोटबुक्स की कॉस्ट दी हुई है 2 इंटू 12 इज कम 24 पीसेज. वी कैन फाइंड 1 स्कोर दैट 20 पीसेज कॉस्ट निकालनी है आपको. वी कैन राइट कॉस्ट ऑफ 24 नोटबुक इक्वल रुपीज़ 960. देन कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक 960 divided by 24. We can cut here 12 2s are 24, 12 8s are 96, 0. 2 1s are 2, 2 4s are 8. Rupees 40. One cost notebook cost is rupees 40. Then 20 multiplied by 40 is comes 800. Rupees 800 cost of 1 score notebook. Next question is, which is the better buy? 3 liter milk for rupees 105 or a 5 liter milk for rupees 180. Okay, comparing both the reason, we can find first 1 liter cost of milk. Then 105 divided by 3 is come 3 3s are 9, 3 5s are 15. Rupees 35 1 liter milk cost. Then we can find here 1 liter milk cost rupees 180. 5 liter milk cost, 1 liter milk cost 180 divided by 5. 5 3s are 15, 5 6 are 30. Rupees 36. Rupees 36 1 liter milk cost. आप देख रहे हैं जब हम 3 लीटर मिल्क रुपीज़ 105 में ले रहे हैं तो वो हमको कितने में पड़ रहा है 35 रुपीज़ 1 लीटर. और जब हम 5 लीटर मिल्क ले रहे हैं 180 रुपीज़ का तो वो हमको पड़ रहा है 36 रुपीज़ 1 लीटर. विच इज़ अ बेटर बाय ग्रेटर which one is greater 36 rupees greater. So we can buy 3 liter milk for rupees 105. 9B is homework.